Okay, the next is okay, reaction with air. Now boron, generally we know that the boron, amorphous boron especially, crystalline boron is icosahedron structure, so it will not go for the reactions. However, amorphous boron reacts with air to give B2O3. Why the formula B2O3? Anybody? Crisscross, आपको पता है ना, cross valency. There is a -2 charge on oxygen and +3 on boron, so it will be B2O3. Similarly, aluminium reacts with oxygen to form Al2O3, gallium Ga2O3, indium In2O3. But what about thallium? Thallium, yesterday only, while just explaining the inert pair effect, I have told you that thallium exhibits +1 oxidation state. In +3 oxidation state, it is not very stable. So it is exhibiting +1 oxidation state, and just like sodium Na2O, it is forming Tl2O. Any doubt to understand this? No, ma'am. Okay. Can you see the icosahedron structure? Icosahedron structure, it is 2 pentagon, and above the one pentagon there is a boron, and below the pentagon also there is boron. So it is 20 faces are there. This is icosahedron structure, which is very rigid, very crystalline and very hard to break the bond. That's why boron has high melting. We have already discussed in the physical property that boron's melting point is very high. Its ionization enthalpy is very high because of its small size. Its melting and boiling point is high because of this structure. We have already discussed. Any doubt in this slide? If you want, no, ma'am. Any slide to No, discuss? Okay. Now, I've told you that impure boron reacts. Pure boron, that is a crystalline boron, does not react. Why? Because of the icosahedron structure, icosahedron structure. Impure boron का surface जो होता है थोड़ा rough होता है, तो rough surface में ऑक्सीजन का अटैक बड़ा आसानी से होता है. That's why impure boron जो है आसानी से ऑक्सीजन से react करता है, and pure boron does not react with oxygen. Yeah, amorphous boron can react. Now, a very unique property एल्यूमिनियम का आप देखिए, ये भी मैंने डिस्कस किया था कि एल्यूमिनियम हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम मेटलर्जी में भी यूज होता है किसी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने में. इट्स अ वेरी हाई एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. इट इमीडिएटली कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म Al2O3. Al2O3 जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि मान लो यू आर हैविंग a sheet or any utensil of aluminium, so the upper surface aluminium जो होता है, that immediately reacts with oxygen because of its high affinity, and it forms a layer of very hard white layer, very hard layer. इतना हार्ड होता है कि आप घर में जो बर्तन धोने के लिए जो यूज करते हैं बिम बार और कौन सा बार जो भी है, जितना स्कॉच ब्राइट लगा दो मगर ये हटने वाला नहीं है. इसलिए आपके घर के, हमारे घर के जो एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स होते हैं वो करोड नहीं करते हैं. तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, और फिर फर्दर एल्युमिनियम जो अंदर में है, अंदर वाला जो एल्युमिनियम है, उसको रिएक्ट करने से रोकता है. तो बिकॉज ऑफ दिस प्रोटेक्टिव लेयर, अ वेरी हार्ड एंड थिक लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म. एयर कांट पेनिट्रेट थ्रू दिस लेयर, एंड दिस प्रिवेंट एल्युमिनियम फॉर फर्दर करोजन. ठीक है. Okay. Now the binding capacity of aluminium, अभी मैंने कहा कि aluminium की the affinity of aluminium is very high for oxygen, and for that reason it is used to reduce the metal. ठीक है. तो ये metal oxide को reduce करता है in metallurgy, like chromium oxide, it reduces to chromium. Iron oxide reacts with aluminium, iron is reduced. Copper oxide reacts with aluminium. तो ये इनका ऑक्सीजन लेके ये Al2O3 बनाता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन मेटलर्जी आल्सो. कहीं आपको दिक्कत होगी, यू कैन आस्क. ये सारा मैंने पढ़ा रखा है तो मैं रिवाइज करा रही हूँ. ओके. रिएक्शन विद नाइट्रोजन. एयर में ऑक्सीजन भी है
और एयर में नाइट्रोजन भी। तो बोरॉन एंड एल्यूमिनियम दे रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन, but gallium, indium, thallium, they do not react with nitrogen. Why this is so? Because boron reacts with nitrogen to form Bn. Formula correct hai? Any doubt to understand this formula why it will be Bn? Because boron plus 3 and nitrogen minus 3 crisscross. So 3 and 3, simplest ratio 1:1. That's why it is Bn. Any doubt to understand the formula? Aluminium reacts with nitrogen to give AlN. This is boron nitride. This is aluminium nitride. Now the question is, why gallium, indium, thallium do not react with nitrogen? Actually, here it forms boron nitride or aluminium nitride, and it polymerizes also, and it is able to form the back bonding. Back bonding means boron, agar aap iska electronic configuration likhe, you will find that it is 2p, and nitrogen also it is 2p. So 2p 2p back bonding ho sakta hai. In aluminium and nitrogen, 2p of nitrogen and 3p of aluminium, yahan bhi back bonding ho sakti hai. But in cases mein 2p ke sath nitrogen ka 2p will be overlapping with the gallium. Gallium ka kaun sa hota hai? 4p, indium ka 5p, thallium ka 6p. तो साइज का डिफरेंस होने की वजह से 2p cannot overlap or cannot show the back bonding. तो यहाँ back bonding नहीं होने की वजह से ये compound gallium, indium, thallium, they do not react with nitrogen, but boron and aluminum can react with nitrogen. Now let us see the hydrolysis of boron nitride. Boron nitride का hydrolysis, अगर आप इसको पानी के साथ react करेंगे तो what you will get? The boric acid, BOH3. This is boric acid. It can also be written as H3BO3. This way also you can write this is boric acid. And suppose यहाँ पे थोड़ा explain कर दिया है. Suppose it is B and N, तो B के ऊपर charge है +3 और N के ऊपर minus. Water dissociates into H plus and OH minus. So B3 plus will react with OH minus, so it will form BOH3, or N minus 3 or H plus reacts to give NH3. Any doubt to understand this reaction? Hydrolysis of boron nitride. Okay, so the oxides we have seen, boron form the oxide, aluminium, gallium, indium, thallium, all are forming oxide, and they are also forming hydroxides. Now, what is the nature of these oxides and hydroxides? So boron hydroxide, it is acidic in nature. Aluminium and gallium neutral, or you can say amphoteric in nature. Indium and thallium metallic होने के वजह से it is basic in nature. ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. और अगर ये BOH3, that is boric acid, we call it boric acid, it is acidic in nature though, so it will react with bases. ये एम्फोटेरिक है, न्यूट्रल लिख सकते हैं हम. एम्फोटेरिक है तो एम्फोटेरिक का मतलब है they can react with bases as well as acids, and these two, indium and thallium hydroxides or oxides, they are basic in nature, so they can react with acids. Any doubt to understand this slide? Now, one very important point I would like to discuss. Generally, students get confused. What will be the product? When the elements react with oxidizing strong acid, so दो तरह के acids में हमने divide किया. One is oxidizing acid and other is non-oxidizing acid. So some few examples I have given you. Non-oxidizing acid like dilute H2SO4, conc HCl, dilute HCl. These are non-oxidizing acids. And here just see oxidizing acids, KMNO4, K2Cr2O7, K2CrO4, conc H2SO4. Here dilute H2SO4. Conc H2SO4 oxidizing acid है. Conc HNO3, dilute HNO3, even very dilute HNO3. All these are oxidizing acids. तो कोई भी एलिमेंट जब ऑक्सीडाइजिंग एसिड या नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट करता है, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से जो गैस निकलता है दैट इज H2 गैस, और ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ जो गैस निकलता है चिल्ड्रन, जो करस्पॉन्डिंग गैस, जैसे HNO3 के साथ अगर इट इज रिएक्टिंग इट विल गिव NO2 गैस, H2SO4 के साथ अगर ये रिएक्ट कर रहा है देन इट विल गिव SO2 गैस, KMNO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो MNO2, और
पोटेशियम क्रोमेट या डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो Cr2O3 गैस, ये गैस निकलता है। मतलब आपको याद रखना है कि अगर कोई एलिमेंट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट के साथ साथ H2 गैस लिबरेट करेगा। ये टिप्स है, ट्रिक है, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं करें। और अगर ये एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एसिड, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एसिड मींस ऑल दिस सेट, तो इनके साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट के साथ साथ करस्पॉन्डिंग गैस देगा। मतलब HNO3 है तो NO2, H2SO4, कॉन्क H2SO4 है तो SO2 एंड सो। सो बोरॉन, बोरॉन अगर आपका NaOH के साथ रिएक्ट करता है देन व्हाट इज द प्रोडक्ट? ऑफ कोर्स बोरॉन B3+ बनता है, आयन तो नहीं मगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है। और NaOH के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो OH- के साथ ये रिएक्ट करता है, BOH3 बनता है। पहला स्टेप में तो यू विल गेट BOH3, बट फर्दर अगर एक्सेस NaOH आप लेते हो, more NaOH, then what will happen? Now you just tell me, this is electron deficient compound, yes or no? मोनोबेसिक लुईस एसिड है, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बिकॉज बोरॉन इज बॉन्डेड टू 3 OH, तो 3 बॉन्ड दिख रहा है OH का, दैट मीन्स इट्स ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट। तो अगर एक और OH आए तो इट कैन फॉर्म BOH होल 4 माइनस, BOH होल 4 माइनस, और इस माइनस को सेटिस्फाई करता है सोडियम प्लस, तो कंपाउंड बनेगा NaBOH होल 4। अब इसमें से अगर इफ यू वांट टू रिमूव वाटर मॉलिक्यूल OH होल 4 से, just tell me how many water molecule can be eliminated? 2H2O. तो what will be the product then? अगर आप निकालते हो तो यहाँ से 2H2O निकाल लो तो you will get NaBO2. This is the reaction of boron with NaOH. If you can understand, you can write the reaction yourself. So अब अगर बोरॉन NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम कैन आल्सो रिएक्ट विद NaOH, NaOH के साथ एल्यूमिनियम का सेम टाइप ऑफ रिएक्शन। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 OH माइनस के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, तो इट विल गिव, इसका 3+ चार्ज है, OH माइनस, तो इट विल फर्स्ट फॉर्म AlOH होल 3, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब फर्दर NaOH के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो ऑफ कोर्स जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड कि अगर 3 OH के साथ ये बॉन्ड बना रहा है दैट मींस इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एक p ऑर्बिटल वैकेंट है, तो इट कैन एक्सेप्ट वन मोर OH, क्योंकि OH माइनस है तो ये लोन यहाँ से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, एंड इट विल फॉर्म AlOH होल 4 माइनस, और इस माइनस को Na+ सबसाइड करेगा, तो ये कंपाउंड बनेगा। This is called sodium meta-aluminate. और यहाँ से if you will remove 2H2O, so the formula of this compound will be NaAlO2, NaAlO2 dot 2H2. The same boron and NaOH, how they react with bases. Now the reaction of aluminium with bases, just now we have seen. We can also see the reaction of aluminium with acid. What type of acid is it? Non-oxidizing. So aluminium reacts with HCl, that is non-oxidizing acid, then H2 gas will be liberated. So it will form AlCl3, because Al के ऊपर +3 चार्ज है और Cl के ऊपर -1, तो क्रॉस आप करोगे, क्रॉस वैलेंसी जो अपने क्लास 9 वगैरह में सीखा है, तो कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा AlCl3 एंड हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। बेसिस के साथ जस्ट नाउ वी हैव सीन कि व्हाट हैपेंस विद बेसिस, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद बेसिस, तो मैंने आपसे कहा पहले तो स्टेप में AlOH होल 3 बनाएगा, फिर एक और स्टेप लेंगे तो AlOH होल 4 माइनस बनाएगा, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करोगे तो इट विल गिव यू NaAlO2 डॉट 2H2O प्लस H2 गैस लिबरेट होगा, क्योंकि एसिड के साथ भी इट गिव्स H2 गैस एंड बेसिस के साथ भी इट गिव्स H2 गैस। So reaction of aluminium, because aluminium is amphoteric in nature, so it reacts with acid as well as bases. Gallium reacts with acid, naturally GaCl3 plus H2 gas निकलेगा,
इंडियम रिएक्ट्स विद HCl, InCl3 भी बनता है, InCl1 भी बनता है, क्योंकि ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है एंड H2 गैस, और थेलियम रिएक्ट्स विद HCl टू गिव ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट्स व्हाई TlCl बनेगा ये प्रोडक्ट, दिस इज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। Now, the reaction of boron with oxidizing acid. Just now, I have explained in the last slides. कि with oxidizing acid, it will produce corresponding gas. So, यहाँ पे boron reacts with this is oxidizing acid. So, ये oxidizing acid है, तो boron को क्या करेगा? Oxidize करेगा. यहाँ पे boron का oxidation state 0 है, यहाँ पे +3 है. तो ये oxidize कर रहा है. It will form H3BO3, that is boric acid. And the corresponding gas NO2 will be liberated. यहाँ पे आपने लिया है the acid is oxidizing acid, that is conc H2SO4. Again you will get boric acid and the corresponding gas SO2. ये आपको याद रखना, it's very important कि किस कंडीशन में नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ H2 गैस निकलेगा, बट ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ you will get corresponding gases. A very interesting question. You can see on the screen. Aluminium reacts with acid, even though we can keep conc H2SO4 in aluminium vessel. Why? Anybody in the class? कोई मुझे बता सकता है? अभी हमने देखा कि aluminium reacts with acid, but still aluminium के vessels पे you can keep conc H2SO4. Can you guess why? Anybody in the class? Last slide में मैंने reaction दिया था. It is conc H2SO4. Conc H2SO4 is oxidizing acid. ये oxidizing acid है, तो क्या करेगा? एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज करेगा, एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज करेगा, और एल्यूमिनियम क्या करता है? It oxidizes to Al2O3, which is a very protective layer. Can you guess? तो ये एक बार Al2O3 बना लेगा तो फर्दर रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, क्योंकि Al2O3 is a protective layer. Okay. Next is reaction of boron family with halogens. Halogen के साथ how the boron family members react. तो generally they form trihalides except thallium. ये monohalide show करता है. So boron reacts with any halogen like fluorine, chlorine, bromine, iodine. X is representing any halogen. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. So it will form BX3, aluminium, AlX3, gallium, GaX3, indium, InX3, indium का InX भी होता है, thallium का strictly TlX होता है, यानी कि +1 oxidation state होता है. This is to be noted. Thallium exhibit only in +1 oxidation state, क्योंकि +3 oxidation state इसका stable नहीं होता due to inert pair effect. तो इतना मैंने आपको कल पढ़ाया था, मैंने रिवाइज कर दिया है. Now trihalides of boron, yesterday I was discussing this topic. Trihalides of boron has incomplete octet. So in order to complete its octet, it undergo back bonding or dimerization. ये दोनों टॉपिक मैंने डिस्कस किया था. बैक बॉन्डिंग है, डाइमराइजेशन. या तो वो बैक बॉन्ड करके अपने आप को स्टेबल करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, या फिर डाइमराइज करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा. नाउ द क्वेश्चन इज, कब वो बैक बॉन्डिंग करेगा एंड व्हेन इट विल गो फॉर डाइमराइजेशन. तो कंडीशन क्या है? बैक बॉन्डिंग के लिए कंडीशन है, बैक बॉन्डिंग के लिए कंडीशन है कि वैकेंट ऑर्बिटल एंड लोन पेयर. मतलब एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल, तो ऑफ कोर्स जितने भी हैलाइड्स हैं बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और लोन पेयर. यस, हैलोजन के पास तो लोन पेयर होता है. वी ऑल नो कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास रहता है नॉन बॉन्डिंग, तो लोन पेयर कह सकते हैं. तो दे आर हैविंग, तो वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और लोन पेयर होना चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग. और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? एलिमेंट सेकेंड पीरियड का हो, यानी कि 2p सेकेंड पीरियड का हो, या फिर दूसरा एलिमेंट जो है जिनके बीच में बैक बॉन्डिंग बन रही है
द फर्स्ट एलिमेंट या सेकेंड एलिमेंट, या तो ये सेकेंड पीरियड का हो या फिर ये थर्ड पीरियड का, मतलब दोनों में से one must be of second period and the other must be of second or third period. But if it is 4, 5, 6, then back bonding is not possible. So in BF3, just you see, boron के outermost cell में 2p vacant orbital है, and fluorine का जो filled orbital है, that is also 2p. So 2p का back bonding हो जाए because of their similar size, 2p. बोरॉन एंड क्लोरीन, बोरॉन के आउटरमोस्ट सेल में जो वैकेंट ऑर्बिटल है दैट इज 2p, बट क्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल है व्हिच इज हैविंग अ लोन पेयर, इट इज 3p. आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के यू कैन चेक, इट इज 3p. तो 2p एंड 3p के बीच में भी बैक बॉन्डिंग पॉसिबल, बट BBr3, बोरॉन के पास तो 2p है, बट ब्रोमीन इट इज 4p, आयोडीन इट इज 5p. तो 2p 4p या 2p 5p का बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं, ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं. तो ये कंपाउंड BBr3 and Bi3 they will not go for back bonding, rather they will dimerize. But BF3 and BCl3 they will go for back bonding. Okay. Now how they form back bonding? This is boron. It is bonded to 3 fluorine. 3 fluorine means 1, 2, 3 pair of electrons, 6 electrons. Octet is not complete. One of the p orbital of boron is vacant. Now the bonded fluorine is having lone pair. Here also, here also, here also. Any one of the 3 can donate its lone pair back to boron. This is 2p pi, 2p pi back bonding. 2p of fluorine and 2p of boron. So same type, same size, just see 2p orbital of fluorine and 2p orbital of boron with the same size. So back bonding is possible. But in place of fluorine, if I can take bromine or iodine, the size of this p orbital will be very, very big. तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं होता है, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं होती है बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइज. तो ये बैक बॉन्डिंग करेगा. BF3 और BCl3 में बैक बॉन्डिंग हो सकती है. So any doubt to understand back bonding? Anybody in the class? Yes. May I proceed? May I proceed? Yes, ma'am. Okay. Now, back bonding in aluminum halides. Aluminum halides में कहाँ बैक बॉन्डिंग होगा, कहाँ डाइमराइजेशन होगा. ओके, जस्ट सी AlF3, एल्यूमिनियम के पास वैकेंट 3p ऑर्बिटल एंड फ्लोरीन इज हैविंग फुलफिल्ड 2p ऑर्बिटल. तो वैकेंट 3p एंड फुलफिल्ड 2p, तो 3p और 2p के बीच में बैक बॉन्डिंग हो सकता है. बट AlCl3 एल्यूमिनियम का भी 3p है और क्लोरीन का भी 3p है. 3p का साइज बड़ा होता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होती है. उसी तरह से आगे भी हम जाए तो साइज बड़ा हो रहा है, ओवरलैपिंग पॉसिबल, यानी कि बैक बॉन्डिंग यहाँ नहीं. देन व्हाट AlCl3 will do, AlBr3 will do, AlI3 will do, they will go for dimerization. What is the meaning of dimerization? Di means 2 and merization means fusion of 2 molecules. Fusion of 2 molecules. So 2 molecule will fuse and form dimer. Excuse me. Dimerization, just now we have seen AlF3 do not form dimer. ये क्यों नहीं डाइमर करेगा, क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग करेगा, and rest will form dimer. Excuse me. तो ये भी स्ट्रक्चर मैंने कल आपको डिस्कस किया था.
Excuse me, children. So AlCl3, how it dimerizes? Two molecules of AlCl3. Just to see Al, and it is bonded to 3Cl. This is one molecule of AlCl3. Can you see here? This is another molecule of AlCl3, Al, and bonded to 3Cl. Now these two molecules, what happens? The lone pair of chlorine of this molecule, ये क्लोरीन जो है, ये अपना लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट करेगा, और इस मॉलिक्यूल का क्लोरीन अपना लोन पेयर इस मॉलिक्यूल के एल्युमिनियम के वैकेंट पी को डोनेट करेगा, एंड दस दे सैटिस्फाई देयर ऑक्टेट. इस तरह से इनका डाइमराइजेशन होता है. डाइमराइजेशन में अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Al in AlCl3? sp2, बट नाउ इट विल बी sp3. यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर जाता है, sp3. और आपको दूसरा स्ट्रक्चर हम स्लाइड दिखाते हैं. In this slide, just you Al and the 3Cl, but when it will form, it will dimerize, then it will form banana bond. Excuse me. Now come back to dimerization of aluminum halide. यहाँ पे aluminum with this 2 chlorine and this aluminum with this 2 chlorine, they are on same plane. ये आप dotted line से देख रहे हो, they are on same plane. But this is called bridge bonding और banana bond. तो ये bridge bond जो है, ये aluminum और ये क्लोरीन प्लेन से ऊपर, मतलब ये वाला जो बॉन्ड है प्लेन के ऊपर है और ये वाला बॉन्ड प्लेन के नीचे. इससे पहले जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन था तो ये प्लेनर ज्योमेट्री थी, बट चेंज हुआ तो ये प्लेनर ज्योमेट्री नहीं रहा, तो ज्योमेट्री चेंजेस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एल्युमिनियम क्लोरीन और एल्युमिनियम यानी कि ट्राई सेंटर्ड बॉन्ड बन रहा है. दिस इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड या इसको ब्रिजिंग बॉन्ड भी कहते हैं. ये ट्राई सेंटर्ड बॉन्ड है और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, द अदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हियर, सो 4 इलेक्ट्रॉन. So 4 chlorine and 2 aluminum are in one plane. 4 chlorine, this chlorine, this chlorine, this chlorine, this chlorine. These are 4 chlorine and 2 aluminum. ये same plane पर है. 2 bridging chlorine are out of plane. ये दो bridging chlorine है, this one and this one. One is above the plane and the other is below the plane. Hybridization of aluminum is sp3. जब तक ये AlCl3 था, हाइब्रिडेशन वाज sp2, बट जैसे ही ब्रिज बॉन्ड बनाया, डाइमराइज किया, द हाइब्रिडेशन स्टेट चेंजेस टू sp3. दिस इज 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. 3 सेंटर्ड मींस एल्युमिनियम क्लोरीन एल्युमिनियम, ये 3 सेंटर के बीच में ये ब्रिज बॉन्ड बना है. और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 पेयर हियर, 1 पेयर मींस 4 इलेक्ट्रॉन्स. 3 centered 4 electron bond is there, and this is called banana bond. So this is very, very important. Often this question is asked, what is banana bond? Show the structure of dimerization of AlCl3. Children, is it okay? Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Okay. The next topic is hydrolysis of halides of boron family. It is again very important. अगर हम इनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो what product we will be getting. Now just see, halides of boron family, we are having BF3, BCl3, BBr3, Bi3. So these three, BCl3, BBr3 and Bi3, they go for complete hydrolysis. What is the meaning of complete hydrolysis? Means whatever number of molecules you are taking, all the molecules will hydrolyze, since they will react with water. And upon hydrolysis, what is the product? These 3Cl will be replaced by 3OH. So it will be BOH whole 3, boric acid. और ये जो water है, it will give H plus and OH minus. तो H plus and Cl minus HCl बन के निकलेगा. The same is here. BBr3 reacts with water to give H3BO3. एक ही चीज है, आप इसको H3BO3 लिखे, ओके, या फिर आप BOH whole 3 लिखे. It is the same, boric acid. तो यहाँ पे HCl will be the byproduct, here HBr and here HI. Now BCl3, BBr3 and Bi3, they will go for complete hydrolysis. Complete hydrolysis. But what happens in case of BF3? BF3 भी hydrolyze करता है पानी के साथ and it gives BOH. Boric acid यहाँ भी बनता है and HF. But the problem is there, it go for partial hydrolysis. Partial का मतलब क्या होता है? I'll tell you. अगर आपने suppose 100 molecules लिए, 100 molecules BF3 के लिए, तो all 100 molecules will not hydrolyze. Rather, suppose मान लेते हैं कि 80 हाइड्रोलाइज करेगा, 20 नहीं करेगा, या 85 हाइड्रोलाइज करेगा, 15 नहीं करेगा. मतलब पार्शियल, कुछ हाइड्रोलाइज करेगा और कुछ नहीं करेगा. अब आप पूछ सकते हो क्यों? द रीजन इज सेम, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होती है, क्लोरीन की बोरॉन से बैक बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से आसानी से हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता है. तो ये हाइड्रोलाइज करेगा, तो जो मॉलिक्यूल बच जाते हैं वो क्या करता है? तो वो रिएक्ट करता है, जस्ट टू सी, ये हाइड्रोलाइज करेगा एंड इट विल गिव H3BO3 और HF. और जो बच जाता है, थोड़ा सा जो बच जाता है, तो वो क्या करता है? जैसे बना ये आपका BF3. BF3 फिर फर्दर रिएक्ट करता है किससे? वाटर से, और वहां से इसको मिलता है एक HF. जो ये HF बाई प्रोडक्ट बना, ये इसके साथ रिएक्ट करके BF4 माइनस और ये H प्लस देता है. मतलब ये प्लस नहीं है बीच में, ये एक साथ बनेगा HBF4, ये बना देगा HBF4. ये देखो अलग अलग दिखाया गया है क्योंकि ये आयंस ऐसे आप एक साथ लिखेंगे तो HBF4 बनाएगा. सो दिस स्टेप यू शुड रिमेंबर. ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्लीज नोट इट डाउन. पूरा आपको याद करने का जरूरत नहीं है कि BF3 में पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ऑल द मॉलिक्यूल्स आर नॉट एबल टू हाइड्रोलाइज. आउट ऑफ 100 मे बी 80-85 मॉलिक्यूल्स कैन हाइड्रोलाइज. रेस्ट जो बच जाते हैं, कौन? BF3 जो बच जाते हैं, दे रिएक्ट विथ HF. वो HF के साथ रिएक्ट करके HBF4 बना देते हैं. तो यहाँ पे आपको बोरिक एसिड भी मिलेगा और HBF4 भी मिलेगा. Now comes the compounds of boron. Children, compounds of boron हमें पढ़ना है, तो 3 compounds मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं. One is borax. बोरैक्स को एक और नाम से जाना जाता है, कोई बता सकता है मुझे? सिंदूर. बोरिक एसिड वो भी हमने देखा, H3BO3 एंड डाइबोरेन्स. डाइबोरेन को बता सकते हैं? डाइबोरेन B2H6 डाइबोरेन. तो these are the compounds, borax, boric acid and डाइबोरेन. तो ये 3 कंपाउंड्स हमें पढ़ने हैं.
नाउ टेल मी कि अब तक जो भी पढ़ाया गया है, मैं ये 3 कंपाउंड अगले क्लास में ही बताना चाहूंगी क्योंकि टाइम शॉर्ट हो रहा है. तो tomorrow I will discuss these 3 compounds: borax, boric acid and borane, their structure and their properties and their preparation properties and structure. तो अब तक जो मैंने पढ़ाया है ये नोट्स आपको मिल जाएगा. मैं ऐसे भी आपको स्लाइड्स दे दूंगी नोट्स का, और आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, मैं भेज दूंगी आपको. तो यहाँ तक किसी को समझने में प्रॉब्लम हुआ है? पी ब्लॉक, बोरॉन फैमिली, एक्सेप्ट these compounds. Any cross question? किसी को कुछ पूछना है? No.